Our today's topic of EVS is garbage management. Today we are going to study chapter number 14 and chapter's name is GAR, BAGE base, MANAGE menace, MENT garbage management. So in this chapter we are going to study management of garbage. Okay. So before starting this chapter, let me tell you what the term garbage means. Garbage. All waste material that we throw in the dustbin is called garbage. Waste material means the things which is not in use or unwanted materials. Means ऐसी चीजें जो हमें काम में नहीं आती. Okay, that is known as waste material. So where we throw the waste material, we should throw waste material in the dustbin. And that is known as garbage. और उस waste material जो कि हम dustbin में throw करते हैं, that is known as term garbage. Is that clear? Now here you could remember. Use me. You could remember na in the school what you do generally. You sharp your pencil in the dustbin and the shavings of pencil. Where we put the shavings of pencil in the dustbin. Okay. Now moving on to the further. I will tell you types of garbage. Basically the garbage is of two types. Wet garbage and dry garbage. Okay. First, wet means गीला. Okay. Wet garbage. Waste which start rotting in few days is called wet garbage. Means ऐसा waste जो कि कुछ दिनों में rot होना शुरू हो जाता हो. Rot means सड़ना शुरू हो जाता हो. That is known as wet garbage. For example, vegetable peels and fruit peels. Here you can see in this container peels of onion, potato, tomato and lentils are kept. Okay, so what it is? It is wet garbage. Where we should throw it? We should throw it in the separate bin. Because after few days what you will notice that it will start rotting. ये सड़ना शुरू हो जाएगा and definitely it will have a bad smell और कुछ दिनों में से इसमें बहुत बुरी smell आना शुरू हो जाएगी. Okay. So examples are clear of wet garbage, vegetable peels and fruit peels as I have shown you. Now next is dry garbage. Waste which does not rot is called dry garbage. Means ऐसा waste जो कि rot नहीं होता. Rot means सड़ता नहीं है. That is known as dry garbage. For example, glass, plastic, biscuit wrappers, etc. Okay. Here you can see. In this container, waste material, dry waste material is kept. For example, water bottle is there. Okay, bottle is there. And biscuit wrapper is there. Chocolate wrapper is there. Polythene is there. Used polythene is there. So what is it? This is dry waste material. Okay, these all are dry waste material. It will fall in the category of dry waste. Okay. Now once again have a quick recall of garbage. Garbage you understood. Waste material that we throw in the dustbin is called garbage. Okay, and garbage is basically of two types, wet garbage and dry garbage. Wet garbage which start rotting in few days. Okay, waste which start rotting in few days, that is wet garbage जो कुछ दिनों में सड़ना शुरू हो जाता है. And waste which does not rot is called dry garbage. And examples are clear to you. I have shown also. Now moving on to some more examples. Here I have made two separate bins. One for the wet garbage and another for the dry garbage. In the wet garbage, what you could see? Okay, you can see here some things. Things are there like leaf. Okay, peels are there. Okay, leftover food is there. So these all things we put in a wet garbage. Here the two separate garbage you can see na. The garbage with green color indicates wet and garbage with blue color indicates dry garbage. Okay, bin with the blue color indicates dry garbage. Clear? Now what exactly come in the wet garbage? Wet garbage में कौन सी चीजें आती हैं? Like fruit peels. Fruit peels हमें कहाँ डालने चाहिए? In the wet garbage. Similarly vegetable peels which I have shown you already. Leftover food means जो भी हमारे घर में food बच जाता है, okay, वो हम कहाँ डाल देते हैं? In the wet garbage, in the wet bin we can say. Similarly leaf
बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कंटेन्स मॉइस्चर इन इट. इन सारी चीज़ों में मॉइस्चर होता है, गीलापन होता है, और ये कुछ दिनों बाद क्या हो जाती हैं, रोट होना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती हैं. दैट्स वाई वी शुड हैव सेपरेट बिन at our home. Okay, similarly we should have separate bin for dry garbage also. And what kind of things we have to keep in it, like bottles, cans, wood, paper, glass, metals and plastic and so on, etc. Okay, here you can see some examples. Broken glass is there, nail is there, wrapper of biscuit is there, bottle is there, nail. Metal example I have given here, metal, nail means keel. Okay, so these all are what, this is dry garbage. So now you want to know that why we should have separate bins, कि हमारे पास separate bins क्यों होने चाहिए, हमें separate bins क्यों रखने चाहिए घर पे. So now I am going to tell you why we should have separate bins at our home. We should put dry garbage in a separate bin. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाई इज ड्राई गार्बेज पुट इन अ सेपरेट बिन. क्यों डालना चाहिए हमें ड्राई गार्बेज एक सेपरेट बिन में. द रीजन इज दिस, सो दैट इट कैन बी रिसाइकल. वी शुड पुट ड्राई गार्बेज इन अ सेपरेट बिन सो दैट इट कैन बी रिसाइकल. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, वेयर वी विल थ्रो इट इन द dry bin. Okay, if we will throw it in the dry bin so that only it can be recycled, ताकि वो क्या हो सके, recycle. For example, here you can see I have made a paper bag with waste paper. Okay, so if you will separate your bins, so what will happen, the dry garbage can easily be recycled. Now you want to know why we should have separate bin for the wet garbage also. Now the reason is here. Basically we should separate wet garbage so that a manure can be composed. हम manure के लिए क्या करते हैं, जनरली wet garbage को separate करते हैं ताकि उसका कुछ यूज हो सके, मीन्स वो किसी काम में आ सके. तो wet garbage भी हमें क्या आता है, there is a use of the wet garbage also. Okay, now let me tell you. This is a new topic for you, that is compost manure. It is prepared by digging pit in the ground. हम compost manure की बात क्यों कर रहे हैं, because in the compost manure, okay, compost manure जो है basically ये हमें किसके लिए काम आने वाली है, for our wet garbage, कि हम wet garbage का management कैसे करते हैं. For it we are going to learn this. Okay, the first step is टू डिग अ पिट इन द ग्राउंड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड में पिट को डिग करेंगे, खोदेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे. देन द वेट गार्बेज विच यू हैव सेपरेटेड एट होम, जो आपने सेपरेट बिन में डाला है अपने घर में, ओके, वो बिन आप कहाँ लाके डाल देंगे, उस बिन का जो डस्ट है, उसका जो गार्बेज है, वो आप कहाँ लाके डाल देंगे, इन दिस पिट. ओके, व्हेन दिस पिट इज गोइंग टू बी नियर बाय फुल, जब ये पूरी तरीके से फुल हो जाएगा, then what you are going to do, the third step is to cover the pit. हम इस pit को cover कर देंगे. And after 2-3 months what you will notice, there will be a manure in pit. यानी 2-3 months बाद उस pit में क्या हो जाएगा, वो जो soil है, okay, soil से जो हमने cover किया उसके अंदर वो किस में turn हो चुकी होगी, manure में. manure means खाद में turn हो चुकी होगी. So now you could understand ना कि we are having two different uses of these garbage. तभी हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. ड्राई गार्बेज का आपने क्या यूज सीखा कि ये रिसाइकल होता है, एंड वेट गार्बेज इज यूज्ड फॉर कंपोजिंग मैन्योर. इज इट क्लियर कि ये हमें मैन्योर बनाने के काम आता है, इसीलिए हमें वेट गार्बेज को भी सेपरेट करना चाहिए. दिस इज सेम व्हाट इज रिटन हियर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिगिंग पिट इन द ग्राउंड. यानी कंपोस्ट मैन्योर कैसे बनता है, ग्राउंड में पिट को डिग करके, एंड देन ऑल द वेस्ट इज बीइंग डम्प्ड इन द पिट. उसके बाद हम सारा वेस्ट जो है वो पिट में डाल देते हैं. व्हेन द पिट इज फुल, कवर इट विथ सॉइल. जब पिट फुल हो जाता है तो हम इसको सॉइल से कवर कर देते हैं. एंड विद इन 2-3 months द वेस्ट रॉट फुली. एंड व्हाट यू विल नोटिस, दैट आफ्टर 2-3 months जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से रॉट हो चुका होगा, एंड इट विल टर्न इनटू मैन्योर. ओके, नाउ आई होप सो यू अंडरस्टूड इट, एंड थ्रू दिस वीडियो, और आई कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ dry and
wet garbage is clear to you all. This is all about the management कि हम कैसे मैनेज करते हैं ड्राई एंड वेट गार्बेज को. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.